Greetings everyone, I am Komal. Welcome back to my channel Tech Learning. Today we are going to study the topic functions in MS Excel. So what are functions? These are predefined formulas used to perform both simple and complex calculations. Excel हमें कुछ pre-designed formulas provide करता है जिसके help के through हम simple और complex calculations को perform कर सकते हैं. ये हमारा time save करेगा और एक्सेप्ट करेगा आर्ग्यूमेंट्स को और हमें रिटर्न करेगा वैल्यूज़. आर्ग्यूमेंट्स क्या है? इनपुट वैल्यूज़ जो हम प्रोवाइड करते हैं और ये हमें क्या देगा? आउटपुट, दैट इज रिटर्निंग अ वैल्यू. फंक्शन मस्ट बिगिन विद एन इक्वल्स टू सिंबल. So start Excel, click on plus, blank workbook. Let us discuss what are the rules to enter a function. All Excel functions begin with equals to symbol. सारे के सारे functions equals to symbol के साथ start होंगे. जो function name है वो एक valid name होना चाहिए, like sum, average. जो function name है वो parenthesis के साथ आएगा, एक opening और एक closing bracket के साथ. This is a parenthesis, opening and closing bracket. And arguments जो आएंगे वो हमारे आएंगे इसके बीच में, in between. So our first function is sum. So I'm entering the data for sum. I have written name. I'm going to put oral marks of the student as well as written marks of the student. For example, Kavya got 12 marks out of 20 in oral and 67 marks out of 18 written. Same, Smarth got 18 marks in oral and 76 in written out of 80. Then Prashant got 17 marks in oral and 56 in written. Another student, Palak, got 15 marks in oral and 75 in written. So I'm going to perform the sum right here. So equals to, start typing sum, it will show the formula. Simply click enter. So Kavya got 79 marks out of 100 in total. Similarly, I will drag this. Similarly, I will apply for Samarth, Prashant and Palak. Equals to sum. First number 18, click on number 2, 76 and press enter. 94 equals to sum. First number, number 2, 56, press enter. Similarly, I have got result for Palak. This is how you can perform sum. If you change any value, like I'm making it 65, so the sum will be automatically updated. It was 73 earlier, now it is 82. Students, Excel हमें बहुत सारे functions inbuilt provide करता है. आप FX पे click करोगे तो you can see that it provides us some financial functions, some logical functions, text functions, lookup and reference, date and time, like there are lots of options. Maths and trigonometry functions, you can use any of them. Engineering functions, statistics functions, database functions and compatibility functions, you can use any of them. We have used some of them, so let's see. Our second function is average. I want to calculate average of 4 entries, 56, 102, 245 and 107. So I'm simply typing the formula equals to average. Simply click and drag and then enter. So here the average of these 4 entries is 127.5. This is how you can calculate average of any entries that you want to. Our next function is product.
Let's see, we want to do product of two or more than two numbers. First of all, I'm taking example 10 multiplied by 10 because you all know the answer. So I'm applying equals to product first number 10, click on second number, then click on 10, press enter. So the product is 100. Yes, it is absolutely correct. Now I want to do another calculation. 20 multiplied by 6 equals to product 20 number 2 6, press enter. 120. It is completely correct. 25 multiplied by 10 equals to product first number 25, number 2 10, press enter. 250. This is how product can be done in MS Excel. Now let's see some bigger number like 25 multiplied by 25. We all know the answer, equals to product 25 number 2 25, enter. 625. This is how you can apply product in MS Excel. Next function is to calculate square root in MS Excel. As we all know that square root of 64 is 8, so we will be taking this value square root of 64 equals to SQRT number 64. Square root of 64 is 8. Let's see, of 81 equals to SQRT number. You can manually type 81. Yes, we know that it is absolutely correct. Let's see square root of another number. SQRT number is, let's say, 125. So 125 का square root क्या है? 11.1803. This is how you can calculate square roots in MS Excel. Now next function is that I want to calculate power. So the power function is here. I'm going to multiply 3 raised to power 2. So I'm applying power here, equals to power 3, then power, I want to calculate power in 2. So 3 multiplied by 3 is 9. We know that 3 raised to power 2 is 9. So the answer here is absolutely correct. Now I want to calculate 2 raised to power 5. So 2 here, power here 5, and equals to power, number is 2, power is 5. So 2 raised to power 5 is 32. We all know that. So it is absolutely correct. This is how you can apply power function in MS Excel. Now next is mode function. How to apply mode in MS Excel. So let's see. We want to apply mode, equals to mode. Number 1 is 64 and the divisor is 8. So the answer is 0. This is absolutely correct because we know that while dividing the number 64 by 8, we will get the remainder as 0. So basically what does mode do? It provides us the remainder after डिवाइडिंग अ नंबर बाय द डिवाइज़र. जैसे ही वो किसी नंबर को किसी डिवाइज़र से डिवाइड करेगा उसके बाद जो बचा हुआ रिमाइंडर है हमें वो रिमाइंडर देगा. चलो कुछ और डिवाइड करके देखते हैं. लेट्स सी, वी वांट टू डिवाइड 78 बाय 4. सो द आंसर हियर इज 2. रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 2. बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज रिमाइंडर. सो व्हाट डज मोड प्रोवाइड अस? रिमाइंडर आफ्टर डूइंग द डिवीजन. ना हाउ इंटरेस्टिंग इट वुड बी अगर हम ये फाइंड आउट कर पाएँ कि आज का मंथ क्या है, अभी की डेट क्या है, आवर क्या है, सेकेंड्स क्या है, मिनट्स क्या है, ईयर कौन सा चल रहा है. सो देखो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि आज क्या है. What is the date today? So you have to type equals to today, press enter. Today is 4th of June 2021. Now I want only month to be here. मैं सिर्फ month display कराना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी? Equals to month today.
मंथ कौन सा है, 6th। अब मुझे मंथ चाहिए कौन से फॉर्मेट में कि ये मेरा आ जाए जून लिखा हुआ मिले, तो आई विल बी टाइपिंग टेक्स्ट टुडे टाइप क्या किया मैंने, डबल कॉलम्स के अंदर कैपिटल M 4 टाइम्स, सो इट विल प्रिंट जून, कि अभी क्या है, जून। नाउ सिमिलरली आई कैन चेक फॉर डे एज वेल, इक्वल्स टू टेक्स्ट अगेन टुडे, एंड हेयर आई विल बी पुटिंग डेट के लिए डी डबल कॉलम्स के अंदर, प्रेस एंटर, टुडे इज फ्राइडे, येस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन फॉर, चलो अब देखते हैं टाइम के अंदर आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स। देखो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू आवर, देन अंदर पुट करेंगे नाउ फंक्शन, जिससे क्या हो जाएगा, हमें अभी का टाइम मिल जाएगा। देखो इसने दिखाया 16, नाउ हमारा जो फॉर्मेट है 12:12 का फॉर्मेट है, 12 आवर्स इन अ डे, 12 आवर्स इन अ नाइट, तो यहाँ दिखाया है 16, तो 12 + 4 इज 16, टाइम इसने दिखाया है 16, बिल्कुल करेक्ट। अब देख लेते हैं हम मिनट्स, इक्वल्स टू मिनट देखने हैं मुझे अभी के, प्रेस एंटर, कितने मिनट्स हो रहे हैं, 50, येस यू कैन चेक ऑन माई स्क्रीन, कितने मिनट्स हो रहे हैं, 50, येस। नाउ आई वांट टू चेक सेकेंड्स, सेकेंड चेक करने हैं मुझे, वो भी अभी के, yes 22 seconds हुए हैं। दिस इज हाउ यू कैन चेक द seconds, minutes and hour of the day, and if you will click it at after some time, then it will show the updated time, like after some seconds will turn to 21, 22, 23. This is how it will work. This is it for today's video. Give a thumbs up if you like the video, subscribe the channel for some more videos. Thank you.